right, let's open up the debate. We have a panel over here at Vijay Chowk on the special session of the Parliament and of course the historic move of tabling of the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam. On my extreme right is Mahua Maji, Rajya Sabha MP from JMM, Charu Pragya, spokesperson of the BJP. On my left are Rami Desai, political analyst, and Tehseen Poonawalla, also a political analyst. Mahua Maji, I want to begin with you first. आप सांसद हैं राज्य सभा से, कोई रिजर्वेशन बिल तब नहीं था, अब आ रहा है, हालांकि राज्य सभा के लिए नहीं है. Are you excited, happy that this will open doors for women and representation like never before? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोग भी विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं. मेरी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उठाती रही है. इनफैक्ट हमारे स्टेट में महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण है और इस बार बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं मुखिया या जिला परिषद अध्यक्ष और इन चुनाव में जीत कर आई है और हम चाहते हैं कि एमएलए और एमपी इलेक्शंस में भी उनकी भागीदारी रहे. मैंने खुद राज्यसभा में कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि विमेन रिजर्वेशन बिल होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन भी हो. हम चाहते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के लिए, तीनों के लिए हो, क्योंकि अदरवाइज जो अपर क्लास की महिला, अपर क्लास मीन्स जो ब्यूरोक्रेट्स के फैमिली की महिलाएं हैं, बड़े राजनीतिक नेताओं के परिवार की हैं या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की परिवार की हैं, यही महिलाएं उस आरक्षण का लाभ लेकर चली जाएंगी. हमारे स्टेट में पिछली बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्री के लिए सिर्फ ₹1 फीस रखा था, रजिस्ट्रेशन फीस, ताकि जो गरीब महिलाएं हैं वो भी जमीन खरीद सके, उसके लिए बहुत ज्यादा टैक्स ना देना पड़े सरकार को. बट उसका लाभ ये, उसका नुकसान ये हुआ कि जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे उन्होंने अपनी पत्नियों के नाम जमीन ली, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, सबने उस पैसे को बचाया और हमारे राज्य को राजस्व की हानि हुई. तो ऐसा ना हो कि इस आरक्षण से अगर सही रिजर्वेशन एसटी, एससी, ओबीसी के लिए ना रहे तो खाली एक ही क्लास को उसका फायदा ना मिले. ठीक है, आप कह रही हैं एक ही क्लास को कोई फायदा ना हो. आई टेक अ काउंटर ऑन दैट, चारू. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उसकी बात पहले कर लेते हैं. द प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट द हिस्टोरिक मोमेंट येस्टरडे, टेबलिंग ऑफ कोर्स ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है. लेट्स गो अक्रॉस टू प्रतिभा फॉर मोर ऑन दैट. यस प्रतिभा, ओवर टू यू. Yes, Swati. So the Prime Minister's tweet has come in and he has also tweeted a very special video glimpses of what happened yesterday. Apart from that, he says yesterday was a very special day for our democracy. I'm confident that the new parliament will enhance the dedication and further transformative governance for our nation. Here are the highlights, and he has tweeted this video from yesterday from the new parliament building where he's seen with the top leaders and of course that group photograph that he took with all the MPs from different parties. So he says that it was a very special day for the democracy as it will enhance the dedication and further transformative governance for the nation. All right, transformative governance for the nation. Charu Pragya, many believe कि ये जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल जुमला है, क्योंकि जब तक आपका सेंसस नहीं होगा, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं होगी, तब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा. दूसरा, जैसा कि महुआ माजी ने कहा, रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटी. Good morning, Swati. See, the art of doing the impossible has been perfected by my honorable Prime Minister. Everybody said राम मंदिर नहीं बन सकता. बार बार यही कहा जाता था ना, मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे. देखो मंदिर बन रहा है, सबको डेट भी मालूम है. Everything's in great order. Everybody believed the abrogation of 370 could never happen. He did that and he showed that a government with the will can make it happen. I think the same applies to this women reservation bill. Now here is a government which has the dedication to show action on ground when it comes to truly empowering women. We also believe in women-led empowerment, not merely women empowerment. Here, I think the time is absolutely perfect to introduce a bill like this. A historic day like yesterday, our first day in the new parliament, and the first bill that was tabled was this one. I am very positive about this, and I want to actually tell the opposition that for once in the last 9.5 years of Modi governance, please follow an agenda which is positive. Do not come here and criticize everything that Modi government is doing, even though in principle you pretend to agree with this bill. So you're saying for once support without any condition. I will take a counter from Tehseen Poonawalla, but Tehseen, we have some breaking inputs coming in. The list of speakers has been accessed here. Party wise कौन-कौन इस मुद्दे पर अपनी बात रखेगा, आपको बता दें. स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से महिला रिजर्वेशन बिल या जैसा कि इसको नाम दिया गया है नारी शक्ति अधिनियम पर अपनी बात रखेंगी. फ्रॉम कांग्रेस इट इज गोइंग टू बी सोनिया गांधी. कल पहली प्रतिक्रिया जब आई तो कहा कि अच्छा है, ये तो अपना ही बिल है. टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा होंगी, शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन की तरफ से अरविंद सावंत होंगे, सेना शिंदे फैक्शन की तरफ से भावना गवली होंगी और एनसीपी की तरफ से
जो कि अजीत पवार का कैंप है, सुनील तटकरे अपनी बात रखेंगे. तहसीन पूनावाला, for once the opposition without any condition or criticism needs to support this wholeheartedly, says Charu Pragya. How do you respond? Swati, first of all, good morning to you, to all my fellow panelists and to all the viewers, and once again congratulations to all the women and citizens of this country on the women's reservation bill. Do I still believe, and I often say Swati on your show, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं. तो जिन महिलाओं ने इतने बड़े नंबर में भाजपा को वोट दिए, उनको भी ठगने का काम भाजपा कर रही है. Let me ask my dear friend Charu Pragya, what is the date of the delimitation? It won't happen, Swati, because linking this to delimitation simply means delimitation is not going to happen because the southern states are not going to let delimitation happen. Number two, census for 2021 has not happened. First time in the history, 150-year history of this great country, has census not happened. You don't have a date for census. When is the 2011 census data going to be published? First 2011 data will be published, then 2021 census when it happens, then it will be published, then delimitation, so this won't happen till 2029. Now one simple question, Charu, here is a challenge, a political challenge. Forget 2029. Why doesn't BJP give 33% women tickets in Lok Sabha? Today, Charu, on this TV, on this channel, you promise that whether reservation comes in 2029 or not, 2024, 33% women will get Lok Sabha tickets. Do that. Oh, please. Why do you need a bill for that? Tehseen, you know, very respectfully now, we are the only party in the country which actually has an internal reservation within the party for party officials at 33%. The only party, your party doesn't, and the party you support actually is the party of Ladki Hu Lad Sakti Hu. Amazing slogan, and I also like it. But Ladki Hu Lad Sakti Hu is only applicable in the state of Uttar Pradesh. तो पंजाब की लड़की नहीं लड़ सकती, गोवा की नहीं लड़ सकती, कर्नाटक की नहीं लड़ सकती, क्योंकि वहाँ पर तो आपने 8% टिकट दिए. All those parties are bad. You are a party with a different. Why should it only be for BJP? I think bring in a law. ये hypocrisy और double standards political parties जो follow करती हैं कि संसद के अंदर women's reservation bill के लिए बात होती है और टिकट देने की बारी आएगी तो महिलाएं दिखाई नहीं देती. Good morning, Swati. I have to say, at least we are on this agreement in this panel that it is a historic move, you know. The fact that it is a historic move, I think, you know, we have to look at it in a positive light. Of course, Tehseen has brought up all these, like, doubts, and that is expected, you know, because apparently in this country, opposition means to oppose everything, you know. It doesn't mean to have any sort of positive, like, you know, purview over, you know, what is taking place. But having said that, you know, all these legislations, it's happened to give a level playing field to women. It's happened in commercial legislations. It's happened in welfare legislations, you know. So why should it not happen here, you know? At the end of the day, I don't think, you know, the women's reservation bill should be opposed on the basis of the fact that the BJP is introducing it, you know. You have some categorical problems that can be tabled. But, you know, at this point, it just seems that it's aimed at the BJP, and because BJP is tabling it. All right. You know, we'll continue our discussion. Multiple points have come up here in the debate. We'll quickly take counters on that, but after a short break. Stay on with us.